वे भी कहाँ थे हम लोग? 170 मैम. 170. What we were discussing? Okay, here you have seen that Starbucks was stumbling, right? You have seen that last we discussed about that customers were comparing Starbucks with timid coffee and empty smile. Okay, position of Starbucks was stumbling. From here we had to start. So what was the next step that Skulj took? Okay, so from here, Raviraj, you only start. Yes, ma'am. Ma'am, start करें. So क्या? मैम कहाँ से स्टार्ट करें? From here. So Skulj stepped back. Yeah, ma'am. So Skulj stepped back into the chief executive position in 2008. Among his priorities was restructuring the company's training program to renew its focus on a variety of issues, including bolstering employees or partners in Starbucks lingo, willpower, and self-confidence. We had to start earning customer and partner trust again. Skulls told me that. Okay, so here you saw that Skulj joined back as in chief executive position 2008. And what was his strategy? That we need to earn this customer and partners trust once again as it was earlier. Yes, earlier its feedback was very good, right? Yeah, ma'am. मैम bolstering मतलब क्या हुआ मैम? किधर पढ़े? ये लाइन में था मैम. renew it focus on variety of issues including bolstering employee. Among his priority was restructure the company's training program to renew its focus on variety of issues including bolstering employees training. It is talking about to enhance employee. अच्छा, oh ma'am. Yeah. At about the same time, a new wave of studies was appearing that looked at the science of willpower in a slightly different way. Researchers had noticed that some people like Travis were able to create willpower habits relatively easily. Others, however, struggled no matter how much training and support they received. What was causing the differences? Mark Muravin, who was by then a professor at the University of Albany, set up a new experiment. Okay, another experiment is coming over here. अब तक कितना experiment हो चुका? One was of marshmallow experiment we saw. Cookies experiment we saw. Two experiment was only done till here. Yeah. Okay, so here next experiment is in front of you. Ma'am, and the third experiment of habit of the ma'am, what patients were given. What? Ma'am, the third habit, which patients were given. Third was given. Your voice is not coming clearly. मैम पेशेंट्स को जो मैम हैबिट्स दी जा रही थी मैम. पेशेंट्स को हैबिट दी जा रही थी. Okay, yes, inflection point we were talking about. Yes, जो replacement इसी chapter का है क्या वो? Knee replacement वाला जो हो रहा था इसी का है क्या? Yes, मैम. मैम एक सेकंड, मेरा वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा सही से.
यस, नी रिप्लेसमेंट कौन जल्दी रिकवर किया, कौन जल्दी नहीं रिकवर किया। जो लोग जॉट डाउन किया वो रिकवर किया, और जो जॉट डाउन नहीं किया वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाया। यस, सो दिस वन इज फोर्थ एक्सपेरिमेंट। मैम जो डॉक्टर की बात मान रहे थे मैम, रूटीन उनके द्वारा दिया गया जो तो वो फॉलो कर रहे थे मैम, उनका मैम घुटना सही हो गया था। और मैम जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे मैम, उनका वैसा ही था मैम, वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे अच्छे से। ओके, दिस वन इज फोर्थ एक्सपेरिमेंट। यस मैम। प्रोसीड। वेयर आर यू रविराज? Yeah, ma'am. प्रोसीड। Uh, आप इतने नजदीक से देखते हैं भाई, पूरा आप ऐसे देखें तो आँख कहाँ मैम, चला जाएगा आपका। रहने दीजिए मैम आप। वो वॉइस का प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा था, बीच में कर रहा था, तो पूरा इसीलिए स्क्रीन में हेडफोन घुस अब जाते पड़। हैं आप। सिर्फ आपका सर चश्मा पहन दिख रहा लो। है, इतना क्लोज है आप कैमरा के। लीव इट, या इतना मैम, नजदीक मत देखिए। रुक मैम जाइए, अब पढ़ते हैं मैम। लेट मी चेक कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, प्रोसीड। Yeah, ma'am. He put undergraduates in a room that contained a plate of warm, fresh cookies and asked them to ignore the treats. Half the participants were treated kindly. We ask that you please don't eat the cookies. Is that okay? A researcher said. She then discussed the purpose of the experiment, explaining that it was to measure their ability to resist temptations. She thanked them for contributing their time. If you have any suggestions or thoughts about how can improve this experiment, please let me know. We want uh, we want you to help us make this experiment as good as possible. The other half of the participants were not cod- coddled coddled क्या लिखा मैम? सेम वे, मतलब जिस तरीके से पहले ग्रुप के साथ किया गया, सेम वे में सेकंड ग्रुप के साथ बिहेव नहीं किया गया। Simply या given the order. यहाँ पे दे बताया जा रहा है दो ग्रुप के लोग यहाँ पे कहाँ मुरावन ही कर रहे हैं ना। मुरावन न्यू एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक ग्रुप को बोला जा रहा है डोंट ईट द कुकीज, और प्लस फीडबैक भी लिया जा रहा है, इज इट ओके अगर आप कुकीज नहीं खाएं, क्या ओके, यानी फीडबैक भी लिया जा रहा है, और क्यों नहीं खाएं ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपका बेसिकली मेजर करना है एबिलिटी टू रेसिस्ट टेम्पटेशन। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड दूसरे ग्रुप के साथ जस्ट सिंपली रूड वे में बोला जा रहा है यू मस्ट नॉट ईट द कुकीज। ठीक है, या वहाँ उसके फीडबैक में लीस्ट इंटरेस्ट है। उसके बाद यू विल स्टार्ट नाउ, जस्ट ऐसे ही मतलब ऑर्डर पास करके इट्स डन। ओके, बहुत ही रूडली बिहेव किया गया, जितना काइंड फर्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ किया गया उतना काइंड इसके साथ नहीं थे वो लोग। फिर क्या हुआ आगे देखिए, यहाँ से पढ़िए या पढ़ लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए सेकंड ग्रुप के बारे में भी। Yeah, ma'am. You must not eat the cookies, the researcher told them. She didn't explain the experiment's goals, compliment them, or show any interest in their feedback. She told them to follow the instructions. We will start now, she said. The students from both groups had to ignore the warm cookies for 5 minutes after the researchers left the room. None gave into temptation. Then the researchers returned. She asked each student to look at a computer monitor. It was programmed to flash numbers on the screen, one at a time, for 500 milliseconds a piece. The participants were asked to hit the space bar every time they saw a six followed by तो पढ़ते a पढ़ते 4. जो पुराना हैबिट है वो वापस ओवरलैप करने लगता है। आस्क्ड, ये सब फिर से वापस आ जाता है पढ़ते पढ़ते। चेक करिए, चेक करिए। आगे पढ़िए। Yeah. This has become a standard way to measure willpower. Paying attention to a boring sequence of flashing numbers requires a focus akin
to working on an impossible puzzle. ओके तो अब क्या किया गया, दोनों ग्रुप के साथ आप देख लिए कैसे बिहेव किया गया। उसके बाद नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट मतलब एक टास्क दिया गया, बेसिकली पजल सॉल्व करना था। पजल के एक तरीके से टास्क ही है ये कि आपको स्पेस बार हिट करना है जब भी आप 6 के बाद 4 देखेंगे तो। ठीक है, 6 के बाद 4 देखें आपको स्पेस बार हिट करना है। कौन ग्रुप कैसा परफॉर्म किया वो आगे पता चलेगा। यहाँ से जितेंद्र पढ़िए आप। Yes, ma'am. Voice is clear, ma'am. यस A student who had been treated kindly did well on the computer test. Whenever a 6 flashed and a 4 followed, they punched on the space bar. They were able to maintain their focus for the entire 12 minutes. Despite ignore the cookies, they had willpower to spare. The students who had been treated rudely, on the other hand, treated treated rudely. rudely, On the other hand, did terrible, rival, टेरिबल खराब परफॉर्म किए। जिसके साथ जिस ग्रुप के स्टूडेंट के साथ वो रूडली बिहेव किए वो खराब परफॉर्म किए, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। और जिस ग्रुप के साथ, जबकि कुकीज तो दोनों में से कोई नहीं खा रहा है, ठीक है, दोनों ग्रुप में से कोई कुकीज खाया नहीं, लेकिन हाँ जिसके साथ अच्छे से पेश आया गया वो अच्छा परफॉर्म किए। 12 मिनट्स तक फोकस रहे, और यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किए, दे परफॉर्म टेरिबल। They kept forgetting to hit the space bar. They said they were tired and could not focus. Their willpower muscles researchers determined and had been fatigued by the fatigued, what do you mean by fatigued? fatigued. मतलब Fatigue. थकान थकान। थकावट, हाँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े होंगे। Yes, ma'am. Time and motion, time and fatigue. था ना उसमें फटीग? हाँ, Yes, ma'am. प्रोसीड। बस क्यू इंस्ट्रक्शन क्या थे मैम? रूड इंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, ब्रॉस्ट इंस्ट्रक्शन। Browse instruction. When the Marvin started exploring why students who had been treated kindly had more willpower to found that the key difference was the sense of control they had over their experience. We have found this again and again. Marvin told me, when people are asked to something that takes self-control, if they think they are doing it for personal reasons, if they feel like it's a choice or something they enjoy because it helps someone else, it's much less taxing. If they feel like they have no autonomy, if they are just following orders, their willpower muscles get tired much faster. In both cases, people ignore the cookies, but when the students were treated like cogs rather than people, it took a lot more willpower for companies and companies. कौन सा है? कॉक्स, ठीक है। या टेरिबल आप पढ़ नहीं पाए, वैसे तो टेरिबल कॉमन है, बट यूज दिस टेरिबल, यू वर टेरिबल। कोई भी फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है, यू आर टेरिबल, ठीक है। For companies and organizations, this inside the enormous implication, simply giving employees a sense of agency, a feeling that they are a control, that they have genuine decision-making authority, can radically increase how much energy and focus they bring to their jobs. One 2010 study at a manufacturing plant in Ohio, for instance, scrutinized assembly line. एक मिनट, what do you mean by this? ये तो वर्ड कई बार आ चुका है।
assembly line Scrutinize means worker. कई बार आ चुका है, to investigate carefully. Yes, Scrutinize ma'am. means what? To investigate carefully or closely. Proceed. Power to make a small decision about their schedules and work environment. They designed their own uniform and had authority over shifts. Nothing else changed. All the manufacturing process and pay scales stay the same. Stay the same. Within the 2 months, productivity at the plant increased by 20%. Workers were taking shorter breaks. They were making fewer mistakes. Giving employees a sense of control improved how much self-discipline they brought to their job. ओके तो आपने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट अगेन, दिस वन इज फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो किया गया 2010 में. यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट तो नहीं है बट देखा गया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओहियो में. यहाँ पे असेंबली लाइन वर्कर को थोड़ा बहुत डिसीजन का और फिर मान लीजिए अपने से शेड्यूल डिजाइन करने का थोड़ा बहुत मतलब छूट दिया गया. यूनिफॉर्म भी खुद डिजाइन करने का छूट दिया गया, ठीक है. और बाकी सारा चीज सेम था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम था, इवन पे स्केल तक सेम था, बट स्टिल देखा गया कि 20% तक प्रोडक्टिविटी प्लांट की इंक्रीज हो गई. तो कल को आप लोग भी मैनेजर्स बनने वाले हैं, तो प्लीज इंश्योर कि किसी भी तरीके का प्रेशर अगर आप इम्पोज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट पे, तो वहां पे काम करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है. तो थोड़ा बहुत फ्रीडम दीजिए, थोड़ा थोड़ा डिसीजन का उन लोगों को छूट दीजिए, अपने तरीके से थोड़ा काम करने के लिए थोड़ा फ्रीडम दीजिए, ठीक है. यस मैम. The same lessons hold true at Starbucks. Today, the company is focused on giving employees a greater sense of authority. They have asked workers to redesign how espresso machines and cash registers कॉफी मशीन. तो यहाँ पे क्या है, स्टारबक्स में ऑलरेडी ये सारा चीज फॉलो किया जाता है. स्टारबक्स में ये चीज देखा जाता है. तो सेंस ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या, अथॉरिटी देना मतलब क्या, पावर देना. अथॉरिटी पावर देना. ये पावर दिया जाता है एम्प्लॉय को कि आप खुद से मशीन डिजाइन करिए, कैश रजिस्टर आप रखिए, ठीक है, और डिसाइड देमसेल्फ हाउ कस्टमर शुड बी ग्रीटेड. मतलब आप खुद से, आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया जाएगा कि कैसे ग्रीट करना है. डिसाइड योरसेल्फ कि कैसे ग्रीट करना चाहिए, ठीक है. Yes, ma'am. To decide for themselves how customers should be greeted and where merchandise should be displayed. It's not unusual for a store manager to spend hours discussing with his employees where a blender should be located. We are started asking partners to use their intellect and creativity rather than telling them, take the coffee out of the box, put the cup here, follow these rules, said Chris Ingescob, a vice president at the Starbucks. People want to be in the control of their lives. Turnover has gone down. Customer satisfaction is up since structural returns. Starbucks has boosted revenues by more than $1.2 billion per year. ठीक है. तो आपने देखा कि कैसे इसके छोड़ते के साथ आपका जो स्टारबक्स था वो स्टम्बल करने लगा, और फिर क्या 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 इम्प्रूवमेंट करना हुआ जो वापस से स्टारबक्स बैक टू पोजीशन आया. कैसे आप कस्टमर सेटिस्फाई होने लगे. वही कस्टमर जो आके पहले कंप्लेन करते थे, ठीक है, और कंपैरिजन करते थे, टिपिड कॉफी एंड एम्प्टी स्माइल जैसा कमेंट करते थे, वही कस्टमर अब आके सेटिस्फाई फील करते हैं. टर्नओवर गॉन डाउन मतलब क्या, एम्प्लॉय के टर्नओवर, यहाँ एम्प्लॉय का एम्प्लॉय छोड़ करके कम जाने लगे. है. तो ये सारा इम्प्रूवमेंट हुआ. तो चाहे कल को आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने, फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है. अब लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का,
ये कोई और पढ़िए, पूनम कुमारी। Thank you, ma'am. पूनम। Yes, ma'am. Yes. When Travis was 16, before he dropped out of a school and started working for a Starbucks, his mother told him a story. They were driving together, and Travis asked why he didn't have more siblings. His mother had always tried to be completely honest with her children. And so she told him that she had become pregnant 2 years before Travis was born, but had gotten an abortion. They already had two children at that point, she explained, and were addicted to drugs. They didn't think they could support another baby. Then a year later, she became pregnant with Travis. She thought about having another abortion, but it was too much to bear. It was easier to let nature take its course. Travis was born. She told me that she had made a lot of mistakes, but that having me was one of the best things that ever happened to her. Travis said, when your parents and addicts, you grow up knowing you can't always trust them for everything you need. But I have been really lucky to find bosses who gave me that was missing. If my mom had been as lucky as me, I think things would have turned out different for her. A few years after that conversation, Travis' father called to say that an infection had entered his mother's bloodstream. Through one of the places on her arm, she used to suit up. Travis immediately drove the hospital in Lodi, but she was unconscious by the time he arrived. She died a half hour later when they removed her life support. A week later, Travis' father was in the hospital with pneumonia. His lung had collapsed. Travis drove the Lodi again, but it was 8:02 p.m. When he got to the emergency room, a nurse brusquely told him he would have to come back tomorrow. Visiting hours were over. Travis has thought a lot about that moment since then. He hadn't started working at a Starbucks yet. He hadn't learned how to control his emotions. He didn't have the habits that since then he's spent years practicing. When he thinks about his life now, how far he is from a world where overdoses occur and stolen cars show up in driveways, and a nurse seems like an insurmountable obstacle. He wonders how it's possible to travel such a long distance in such a short time. If he had died a year later, everything would have been different, Travis told me. By then, he would have known how to calmly plead with the nurse, how would have known acknowledge her authority, and then ask politely for one small exception. He could have gotten inside the hospital. Instead, he gave up and walked away. I said, all I want to do is talk to him once. And she was like, he's not even awake. It's after visiting hours, come back tomorrow. I didn't know what to say. I felt so small. Travis' father died that night. On the anniversary of his death, every year Travis wake up early, takes an extra long shower, plans out his day in careful detail, and then drives to work. He always arrives on time. Okay, so here is the end of this story. I think everything is clear. एंड तो बढ़िया नहीं हुआ. यहाँ पे चैप्टर जो एंड हुआ है, ना पापा है ना मम्मी है, दोनों का डेथ हो चुका है. लेकिन अब जो पर्सनालिटी ट्रेविस अब जो सामने है वो एक समझदार आदमी है, वर्क टाइम पे जाता है, ठीक है. और बस ये कि वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी अब हो चुका है. ये था ट्रेविस का स्टोरी और ये सारा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. आई होप क्वेश्चन अगर आए तो इजिली आप कर पाए. ठीक है. Yes, ma'am. अब हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 6. क्या करें, आज ही शुरू करें या नेक्स्ट क्लास में करें? मैम अभी टाइम है. मैम नेक्स्ट क्लास में मैम करते हैं मैम. तो मैम फिर स्टार्ट होगा मैम. स्टार्ट होगा. ठीक है. मैं बस थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं कि क्या है ये स्टोरी में. द पावर ऑफ अ क्राइसिस. और यहाँ पे एक तो टाइटल है हाउ लीडर्स क्रिएट हैबिट थ्रू एक्सीडेंट एंड डिजाइन.
ठीक है, यहाँ बताया बेसिकली। अब जो आप पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कैसे, यहाँ अगेन ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया गया है, इतना तो क्लियर है। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करने के अलावा ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कैसे क्राइसिस से कोई ऑर्गेनाइजेशन उठ करके फिर सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे बताया जाएगा इस चैप्टर में कि कैसे क्राइसिस भी इंपॉर्टेंट है किसी के लाइफ में। ओके, सो द टाइटल इज द पावर ऑफ क्राइसिस एंड हाउ लीडर्स क्रिएट हैबिट थ्रू एक्सीडेंट एंड डिजाइन। फाइन, करते हैं ये नेक्स्ट क्लास में। अगर टाइम मिले तो पढ़ के रखिएगा, तो फिर वहां भी पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। बशर्ते आप लोग क्लास में डिस्टर्ब ना करें तो। Okay, roll 1, 2, Yes, ma'am. 2. 3, 4, Yes, ma'am. 4. 5, 6. Kansha, Tuti, Kansha, you are there. 7, 8, 9, Stuti, कहाँ चलेगा सब लोग। 10, 11, 12, 13, मैम 14। 9 मैम 9 मैं तब से नाम ले रही हूँ भाई, तो बता क्यों नहीं रहे। सॉरी मैम 14, 15, 16, Ma'am, 12. 16, 17, 18. 7 मैम 18. मैम 17 Okay. 19, Yes, ma'am. 20, 19. 21, 22, 23, 24, 25, ma'am 24. Ma'am 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, ma'am. 31. 31, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, I'm 40%. 41, 42, 43, 43 मैम प्रेजेंट Yes, मैम 43 मैम Okay, okay, done. 42, ma'am. 44 यस मैम 45, 46, 47, Yes, ma'am. 45. Ma'am, 45. 46, 47, 48, 49. 48 मैम 48 Okay, मैम 49, 47 49, मैम 47 हो गया भाई। 50, 51, 52, 53, 54, यस मैम 53 मैम 52 51, 52 और 53 53 और कोई। 53 मैम अरे हो गया। 53 के अलावा 50 भी है। 54, 55, 56, ma'am. 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Ma'am, 61, ma'am. Ma'am, 61. 61, 66, 67, 68, 69, 70. Yes, ma'am, 69. Ma'am, 70. 71,
72, 73, 74, 75, मैम 68 present. कौन? मैम 74 74 और कौन बोल रहे मैम हैं? 68 मैम 68, 75, 76, 77, मैम 76 प्रेजेंट 76. अंकित बना चुकी हूँ, आप लो हैंड कर लीजिए. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 83 present, ma'am. 84, 85, 86. Okay, and so 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Yes, ma'am. 91, ma'am. 91. 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Yes 99, ma'am 97. 98, 99, 100. मैम 100. Okay, 99 भी है. मैम 99 Okay, 101 भी है, 102, मैम मैम 98. 98 भी है. कहाँ हैं सब लोग भाई? 98 101 मैम हो गया ना. 98 हो चुका है 98, 99, 100, 101 भी हो गया है. 102 बताइए. 102, 103, 104. 104 present ma'am. All right. Roll number 6. Rule number 6. Yes, ma'am. Connecting. It's already done. All right. Thank you. Thank you, ma'am. Thank